हम लोग योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण दूसरे भाग और उसमें 48वां अध्याय का आलोचना कर रहे थे, जिसमें हमारा विषय था कि ईश्वर कैसा है, किसको ईश्वर कहते हैं, ईश्वर कौन है। We are discussing Yoga Vasistha Nirvana Prakaran and second half, and our topic 48th chapter. Our topic is how is that God? Khamyo. How is that God? That is what we are discussing. ईश्वर उसे कहते हैं जो सबका नियंत्रण करने में स्वतंत्र ही हो और इस तरह स्वतंत्र सबके प्रति सभी प्रकार से अपनी आत्मा ही है। अभी आ रहा है माता जी, अभी आवाज आ रहा है? अच्छा, सबका जो आत्मा है वही ईश्वर है। इसके ऊपर हम कल बहुत विचार किए हैं। सब कुछ आत्मा के लिए ही है। रथ, घर, महल आदि जितने अचेतन पदार्थ हैं वे सब के सब चेतन के लिए ही है। आत्मा से अतिरिक्त कोई चेतन वस्तु है नहीं। आत्मा से अतिरिक्त और कोई चेतन वस्तु नहीं है। इसीलिए भोक्तृत्वता रूप स्वतंत्रता आत्मा में ही आ गई है। उसी से सब कुछ हुआ है, यानी सबका कर्ता वही है, वही सब कुछ ही है, यानी आत्मा ही सबका उपादान और अधिष्ठान भी है। सभी और जहाँ दृष्टि डाला वहाँ पर वही नज़र में आता है, यानी संपूर्ण शक्तियाँ उसी में है, वही भीतर है, यानी सूक्ष्म है, वही सर्वमय सर्वगत है, वही सनातन है। उस आत्मा रूप परमात्मा की नमस्कार है, परमात्मा को नमस्कार है। वो ईश्वर कैसा है उसके ऊपर जो कल विचार कर रहे थे, आज और विचार करो उसका, और कुछ विशेष कुछ बताए, विशेष लक्षण से बताए क्या क्या हो सकता है उसका लक्षण। देखो, कल तो हम पहले विचार कर रहे थे ईश्वर जो है वही आत्मस्वरूप, आत्मा विचार वही आत्मा है। ईश्वर जो है
और वो आत्मा में भी कितने अंतर है अर्थ में, उसको भी विचार करके देखे हैं कि जीवात्मा, परमात्मा और समष्टि आत्मा, व्यष्टि आत्मा इत्यादि अलग अलग किस्म के आत्मा का अर्थ को हम समझें, और सारे अर्थ एक में समाहित होता है। एक को अलग अलग दृष्टिकोण से देखने से कैसा अलग अलग दिखता है उसको भी देखे, तो वो सबका जो ज्ञान रखने वाला और सबको जो सब सर्वत्र है वो है ईश्वर, और सबको नियंत्रण करने में वो समर्थ इसीलिए है कि सब कुछ जानता है, सब कहीं है और सब कर्म करता है इत्यादि, सब कुछ वही है, इसीलिए वो ईश्वर सर्व स्वतंत्र है। और जीव परतंत्र क्यों हुआ इसके भी हम कल देखें। जीव परतंत्र इसलिए हुआ कि सीमित होने से, और सीमित होने से दूसरों के ऊपर निर्भरशील होता है, इसलिए परतंत्र कहा गया। ईश्वर सर्वत्र है और सर्वज्ञ होता है सर्वत्र रहने से, और सर्वसमर्थ होता है, इसलिए सर्वकर्ता, सर्वभोक्ता और सर्वनियंता भी उसी को हम ईश्वर कहते हैं। उसका और कुछ ज़्यादा अलग अलग दृष्टिकोण से हम देखना आज चाहेंगे। Yesterday we have seen what is God. God is one and one alone. It cannot be two or many, because it should be, because it is all controller, so it has to be everywhere. Then only it will know everything. Then only it will act as he likes, and then only he can control everything. All controller means he has to be omnipresent, omnipotent, and omniscient. Then only he will be the all controller. And that can be only one, not many. So, because it is omnipresent, so it is everything. There cannot be anything other than him. तो फिर उसी के दृष्टि से देखने से हम कल जो देखे थे, जो व्यष्टि है वही समष्टि है. फ्रॉम दैट एंगल ऑफ विजन what we see, whatever is individual identity, individual being, that cannot be different than the universal being. It cannot be, because that universal being is all-pervading, so nothing can go out of it. It is all alone, one. So whatever is there, it is within it. Just as the waves, the whirlpools, the bubbles, or the water drops, or the fog, or the clouds, or the rivers, ponds, lakes, oceans, everything is water only. It cannot be other than the water. इसी प्रकार परमात्मा सब कुछ होने से अभेद है. There is no difference. It cannot be many, so there cannot be any differences. And from other angle when we see, we cannot see the whole total. Then we have to see partially. That partial vision says individual beings are there, and every being is different from others, and there will be many beings. Just as we took a photography of a mountain,
big mountain, Himalaya. We have to take a photograph of the Himalaya. Himalaya cannot be photographed by a simple photo camera, because it is spread for 3,000 kilometers. How can a single camera hold whole Himalaya in its one snap? Impossible. So whatever photo we take, it is a part of Himalaya, one mountain, or part of one mountain also. Because we cannot take the whole mountain if we are near the mountain. It is impossible. So we take part of it. Similarly, whatever we see, because our vision is our angle of vision is very narrow, so we see something little. We cannot see everything at a time. Who can see everything at a time, at a stretch? Who? One who will be all-pervading. Then only he can see everything at a time. Or else it is impossible. So just as if I want to see myself, seeing is limited. Vision is limited. Feeling may be unlimited. The feeling of the whole totality is possible, but seeing the whole totality is impossible. Seeing means it must be limited, and because it is limited, so there is a question of many. There will be many parts of it. In this way, though the whole total is ever present everywhere in all conditions, yet because of narrow angle of vision, we see the individual beings, which is not other than the whole total being, that is the absolute God. इसी प्रकार हम परमात्मा और जीव का संबंध को जोड़े. This is how the relationship of the individual being with the universal being. They are not different from each other. If you have taken one picture of a small part of one mountain, it is also Himalaya, part of the Himalaya. It is also called Himalaya mountain, isn't it? But it is not the whole total Himalaya. Similarly, but it is part and parcel of the Himalaya, so if we say it is Himalaya and all the structural vision will not be different from the whole total Himalaya structures. It is all the same. Some stones, some clay, some plants. This is what we get in the mountain, and some animals or some birds. This is what we get. Hardly we may get some rivers. What else? So in this way, there is relationship between the individuals and the universal being, but yet because of our narrow vision, we see the many within it, within the one. हम ऐसे ही तो देखते हैं, एक पेड़ को देखते हैं, कितना पेड़ दिखाई दे रहा है? एक पेड़ देखते हैं, एक पेड़ को क्या एक रूप में सारे
पूरा पेड़ को एक नज़र से देख सकते हो तुम? कभी नहीं। कुछ कुछ उसका हिस्सा देखते हैं। तो पत्ता देखते हैं, कहते हैं पेड़। पत्ता देखते हैं, कहते हैं पेड़। मैं पेड़ को देख रहा हूँ। तो ऐसे ही अगर तुम संसार में चलते फिरते सब व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते हो, अगर मानोगे मैं परमात्मा के साथ व्यवहार कर रहा हूँ, तभी तुम्हारे समझ सही होगा। देखते हो तो पत्तों को, कहते हो मैं पेड़ को देख रहा हूँ, तो फिर क्यों नहीं कहोगे एक व्यक्ति को देख करके मैं भगवान को देख रहा हूँ? क्यों नहीं कहोगे? कहना सीखो। When we see some leaves, some branches, we say, I am seeing the tree. Isn't it? Tree is whole totality, but we see the part of the tree. Now, by seeing a part of it, when we say, I am seeing the whole total, so why don't you say, when you see some individual being, why don't you say, I am seeing the universal being? Why should you not? Now the time comes to learn how to speak, how to speak correctly. And that feeling also should come. Everybody, everywhere, the same total being is present. This is how, from one angle there is difference, and from other angle it is whole total. There is no difference. And all these, वो कह रहा है, जो कुछ भी है मतलब नाम रूप, जो कुछ हम देखते हैं संसार में, जो हमारे दृष्टिकोण में दिखाई पड़ रहा है, सब कुछ उसका है, उसी में है, उसी के लिए है, उसके द्वारा है और उससे है, और सब कुछ वही है. When we understand from both angle of vision, the part is whole total and whole total is the part. There is no difference. So, now he comes to the conclusion, whatever we see partially. Whatever we see and whatever we believe to be true, it is true. It is part and parcel of the truth. And all these names and forms, all these beings, they are in the absolute, for the absolute, from the absolute, by the absolute. It cannot be anything other than absolute. It is absolute, it is for the absolute, it is by the absolute, it is from the absolute, it is of the absolute, it is in the absolute. From everything, every angle, it is absolute. वही ये विचार करके कह रहा है, जितने भी जो मान लो रथ, घर, महल आदि जितने पदार्थ हैं, हम क्या देखते हैं? मैं देखता हूँ मेरे को और मेरा को देखता हूँ, इतना ही तो देखते हैं. और क्या देख सकते हैं? मैं और मेरा यही दुनिया है.
मैं और मेरा में मैं तो शरीर हो गया, और शरीर के संबंधी जितने पदार्थ है दुनिया में, खाना पीना से लेकर के रहना, मकान से लेकर के जिसका हम इस्तेमाल करते हैं दिन रात, सब कुछ मेरा है। वो सारा मैं मेरा, ये उसके लिए उसका है, उसी में है, उसके लिए उसी से है, उसी का है, उसी में है, सब कुछ वही है। बोले ये सब कुछ झूठ है, ये सब झूठ है। झूठ नहीं हुआ, वो झूठ को सच बना दिए हम। झूठ एक एंगल से तो झूठ है, मैं और मेरा छोटा एंगल से देखने से तो झूठ हो रहा है, और बड़ा एंगल से देखने से सच हो रहा है। कैसे झूठ और बड़ा? एक दूरबीन लो, है, दूरबीन लेकर के वो दूर जो पहाड़ है ना, उसको बड़ा बड़ा बना करके अगर एक पार्ट को देखेंगे, एक हिरण दिखाई देगा, वो हिरण दौड़ रहा है, हाँ, मजा आ रहा है, देखेंगे, चलो कहाँ जा रहा है देखेंगे। लेकिन वो तो हिरण देख रहा है, और अगर उसको थोड़ा एंगल बड़ा कर देंगे तो सारा पहाड़ दिख जाता है। तो हिरण को देख रहे हो या पहाड़ को देख रहे हो? क्या देख रहे हो? कौन सा सच कौन सा झूठ? अगर एक को देख रहे हो हिरण, वो पहाड़ के अंदर ही है, पहाड़ का है हिस्सा, पहाड़ से ही बना है और पहाड़ के लिए ही है, सब कुछ पहाड़ी है। और हिरण कहोगे तो सच भी है झूठ भी है, हैं? एक दृष्टिकोण से तो सच है, छोटा दृष्टिकोण से सच है, बड़ा दृष्टिकोण से तो वो अंश मात्र है। इसी प्रकार हम कभी जिसको हम सच मान रहे हैं वो कभी झूठ बन जाता है, जिसको हम झूठ मानते हैं वो कभी सच बन जाता है। तुम्हारे कैसा सोच है, कैसे दृष्टि है, कैसे तुम्हारा समझ है, उसी के ऊपर सच झूठ है। कुछ दुनिया में ना सच है ना कुछ झूठ है तो एक ही है। I gave the example of a binocular. Sometimes perhaps you brought and gave me a binocular, small binocular. It is gone somewhere. A bigger one also is there, somebody has it. Big binocular. We see lunar eclipse also in that binocular. You people gave me. Long ago, you have forgotten. Achha. In that binocular, if you try to see small area of the far off mountain, you can see a deer running, and you are much interested, you will be looking at the deer, isn't it? And if you magnify your lens, then whole mountain you will see. So now tell me, what do you see? Do you see the deer or the mountain? In whatever angle you see, what do you see? If you say deer, it is partially true, partially wrong. And if you say the mountain, that is also partially true and partially wrong. So how do you see? How do you feel? What do you see? That makes it whether it is real or unreal. It depends upon you, your angle of vision, and the quality of vision, angle of vision. What do you see?
Similarly, this world, whatever we see, it is beyond speech because we cannot exactly say what it is. Unexpressible. Anirvachaniya कहते हैं, anirvachaniya, unexpressible by language. It is somewhat truth, somewhat wrong. From one angle it looks like truth, from other angle it looks like untruth. So you have to understand what it is, that's all. That is enough. Don't speak anything. And whatever you hear, whatever you speak, that is like that. It is neither wrong nor real. So he says, whatever you see, your house, your vehicles, your castles, and whatever inert beings or living beings, many or relation with each other, whatever you see, all these are for the Absolute, in the Absolute, of the Absolute, by the Absolute, whether it is partial or whole total. It is only the Absolute. दूसरा उदाहरण भी हम दे सकते हैं. आपका अंगुली आपके साथ क्या, आप अंगुली को देखते हो तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बोलो? अंगुली को देखते हो तो शरीर को देखते हो या अंगुली को देखते हो? बोलो. दोनों देखते हो. अंगुली बोलने से सही भी है, गलत भी है. शरीर बोलने से सही भी है, गलत भी है. ऐसे ही सारा दुनिया को समझो. और अंगुली को अगर देखते हो, ये शरीर का है, शरीर में है, शरीर का, शरीर के लिए है, शरीर से है, शरीर में है, शरीर का है, सब कुछ शरीर है वो. ये अलग नहीं हो सकता शरीर से. यद्यपि इसका नाम अंगुली पड़ा है, शरीर नहीं पड़ा है. मतलब इसीलिए ढूंढते हैं हम, व्यवहारिक सत्ता से हमेशा चलते हैं. व्यवहार कैसे होता है उसी के अनुसार नामकरण है, उसका कर्म, उसका गुण, इसी के अनुसार उसका नामकरण होता है. और उसी को हम याद करते हैं, ये कैसा है, क्या है. पूरा को हम भूल जाते हैं. इसीलिए we forget the moment you see the finger. We think of the finger in a from a small angle of vision. But the moment you start contemplating, it is the body, it is of the body, it is for the body, it is in the body. Everything, if you say I am looking at the body, that is neither wrong nor right. Finger is the body and it is also the part of the body. And why we call it finger? Finger is named by its action, its quality, its state of relationship. That's how it is called finger, not the body. We behave with it with difference. It is not the body because it is different from the body. That's how we can use it.
If we take it for body, then we cannot use it. When in our day-to-day life, when you use the finger, you have to use it as individual identity. If you think it is body, then you cannot use it. हर उस उंगली का एक मीनिंग है। जी बिल्कुल मीनिंग है अकॉर्डिंग टू इट्स क्वालिटी, इट्स वर्कमैनशिप, हाउ इट डज वर्क। यस कनिष्ठा मध्यमा, रिंग फिंगर, रिंग इसमें पहना जाता है। We name it according to our use, and that name is not the ultimate name. Ultimate name is body. Whatever we see, it is in the absolute, for the absolute. वे सब के सब चेतन के लिए ही है। आत्मा से अतिरिक्त कोई चेतन वस्तु नहीं है। And that self is the absolute truth, absolute self, supreme self. इसीलिए सर्वभोक्तृता रूप स्वतंत्रता आत्मा में ही है। So, the supreme self is all doer and all enjoyer and non-doer, non-enjoyer. As you think, so it appears. It is all doer because it is everywhere present. So it is non-doer also. And it is, because it is doer, so it is enjoyer also. So now, what is your situation? Where do you stand? Think of yourself. इसी के ऊपर भगवान राम कभी हनुमान को एकांत में पा करके बड़े शांत बैठे थे। हनुमान जी पैर दबा रहा था। राम जी पूछते हैं हनुमान जी को, हनुमान तुम हमेशा मेरे साथ हो, तुम्हारा क्या नाता मेरे साथ है? क्या नाता है? तो हनुमान जी परम भक्त हैं, राम के बिना कुछ दुनिया में सोचते नहीं। तो इतनी सुंदर जवाब दिए। देह बुद्ध्या तो दासो हम। मैं जब शरीर को देखता हूँ, मैं यही नाता लगाता हूँ कि आपका नौकर हूँ। आप तो मालिक हैं, मैं आपका दास हूँ। देह बुद्ध्या तु दासो हम, जीव बुद्ध्या त्वदंशकम। जब मैं व्यष्टि जीव के रूप में अपने आत्मा को आपसे अलग देखता हूँ, तो आपका अंशभूत समझता हूँ। जैसे अंगुली और शरीर का भेद, मैं आपका अंश हूँ। आत्मबुद्ध्या त्वमेवाहमिति इति में निश्चितमति। और आत्मबुद्धि से उसमें कोई भेद नहीं, जो आप हैं वही मैं हूँ। भक्तों का यही भावना हमेशा रहता है। भक्त शरीर को देखने से परमात्मा का दास मानते हैं, और आत्मबुद्धि से कभी देखते हैं तो भगवान का अंशभूत देखते हैं, और परमात्मा की दृष्टि से वो परमात्मा से अलग नहीं देखते हैं। जब ध्यान मग्न हो जाते हैं तो परमात्मा बन जाते हैं।
जब पूजा पाठ उपासना करने लग जाते हैं तो कभी तो दास बन जाते हैं, उनके काम सब करते हैं। जत जत कर्म करो मी तत्तद अखिलम शंभो तवाराधनम। मैं तुम्हारे आराधना करता हूँ, मैं तुम्हारे दास हूँ, तुम्हारी काम करता हूँ, जो कुछ करता हूँ तुम्हारा है। जैसे बंधुआ मजदूर खेती में मालिक के लिए काम करता है, ऐसा भक्त लोग ऐसे ही काम करते हैं। भक्त क्या, सब हम भक्त ही है, मानो न मानो, क्योंकि हमारा तो एक तरफ बुद्धि है ही नहीं। कभी बुद्धि निश्चित हो जाता है, बदलता रहता बुद्धि। इसीलिए हम भक्त के माफी ये संबंध को तोड़ना नहीं चाहिए। What he explains, once Ram asked Hanuman, what relationship you have with me? So Hanuman ji replied, when I think of my body, I do everything for you, but through my body, I am your slave, I am your servant. And when I think of my inner self, I am your part and parcel. And when I think of this self, supreme self, there is no difference between you and me. I am one with you. There is no difference. 3 types of relationship. So why he explains all these, how to think of that all controller and the absolute truth, the controller of the universe, and what relationship you have with all them from different angles of vision, as you are a limited individual being. So what relationship you have with the Absolute? How is your stand? Where do you stand? What is your real identity? So in these 3 ways we can have our relationship. Whatever is visible to our eyes, they though from ignorance point of view, because we forget that point of view, we think it belongs to me, but that is not correct. It belongs to the Absolute only. Then only, why we discuss in this way, then only you can have detachment for the outer world, and you can grow dispassion, which is the root cause, which is the seed for the tree Samadhi. The tree is Samadhi. The fruit you enjoy in the end is bliss, and the seed is dispassion, detachment for the sense objects around you. So you must be clear, whatever is visible around you, whatever belongs to you, it is not yours. It is for him, by him, in him, from him. You have nothing, no right over all these. No right. Your rights are taken away. कोई हक नहीं तुम्हारा। इसी को ये इतना विस्तार से इस ढंग से समझा रहा है। इसी को कहा गया शॉर्टकट में, ईशावास्यम इदगम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृद्ध कस्यचिद धनम। कस्यचिद मतलब
किसी का धन को तुम ग्रहण नहीं कर सकते हो। किसी का मतलब जो मेरे बाहर है वो सब किसी का है, तुम्हारा नहीं, ये समझना चाहिए। इसीलिए सबके साथ मिलजुल करके भोग करना चाहिए। उसके ऊपर हक नहीं जमाना, तुम्हारा हक नहीं। ये हक को सब जगह में, सब शास्त्रों में हक को काटा। योर राइट इज टेकन अवे इन by all means, by different ways. You have no right over this world. Nothing belongs to you. Nothing is yours. Be clear. Whatever you see, whatever belongs to you, you claim. That claim is wrong. It belongs to him, not to you. So don't capture, don't have right on, don't dominate over anything around you, what you claim to be yours. No right, all the rights are taken away. You are all alone. Now, my dear, where will you go? Now you are bound to surrender. है कि नहीं? और कोई रास्ता नहीं। ये समझ जाने के बाद कोई रास्ता और तुम रहता नहीं। अरे कुछ भी करो, जो नाक दबाओ और पैर को ऊपर करो, सिर को नीचे करो, या कसते रहो, कुछ भी करो, वो कोई काम का नहीं। आखिर तुमको हाथ उठाना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। चारों तरफ दुश्मन खड़ा है, कुछ नहीं कर सकता, हाथ उठा दो। हम सरेंडर करने चाहते तो सरेंडर होता नहीं। ये समझने से, मान लेने से सरेंडर हो जाएगा। मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, मेरा कोई संबंध किसी के साथ नहीं। अलग पड़ जाओगे तो क्या करोगे? ये वो तो होता नहीं ना, मेरा सब कुछ मेरा है, मैं हूँ, मेरा है। इसको तो हम भूल नहीं सकते, मानते नहीं। अगर मान लिया कोई मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, तब फिर जाएगा कहाँ बेचारा? हाथ उठाना पड़ेगा। सारे जितने शास्त्र, जितने योग किस्म के बताया गया, चाहे भक्ति हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे योग राजयोग हो, चाहे कर्म योग हो, चाहे तंत्र हो, चाहे मंत्र हो, चाहे यंत्र हो, कुछ भी करो, आखिर यू हैव टू, whatever yoga you practice, whatever you do, whatever sadhana you do, in the end you are bound to surrender. You are bound to surrender. That is the ultimate, the last trial. So all sadhana is to understand how to surrender. Yes, and it is a gradual surrendering. ये जो हम जो कह रहे हैं ना, जो विषय के प्रति वितृष्णा, वो तो सरेंडर ही है, मेरा नहीं है। तो किसका है फिर? संबंध को काटना और वैराग्य पैदा करना, ये सरेंडर का एक स्लो प्रोसेस है। सारे साधना हम जो कुछ भी करते हैं, ममता को काटना, तो अलग हो जाना, अलग थलग पड़ना, तो आखिर में समझ में आ जाएगा, अरे भाई मेरा कुछ नहीं, विवेक उदय हो जाएगा। हमारा सरेंडर तो ऐसा समझ, भगवान मैंने सरेंडर कर दिया, तूने मेरा काम क्यों नहीं कर रहा? वो तो मुख जवानी, मुख जवानी सब कुछ होता है, अंदर से कुछ नहीं। जब तक हम अपने आप को कुछ मानते हैं तो सरेंडर नहीं होगा, नहीं हो सकता। मैं अगर हूँ तब वह नहीं, कहा ना, मैं हूँ तो तू नहीं, तू है तो मैं नहीं। मैं अगर रह गया तो फिर वो नहीं है, और सरेंडर नहीं, कुछ नहीं, सब मेरा है, सब कुछ दुनिया, सब मैं ही मालिक हूँ, सब कुछ मेरा है।
मैं हूँ तो सब मेरा बन जाता है। स्वामी जी, जैसे हमने हनुमान जी का उदाहरण लिया, जिन्होंने तीनों तरीके से अपने को भी अपना संबंध परमात्मा के साथ कैसे है, तो साधक की तरह हमें भी तीनों तरीके से संबंध देखना चाहिए या एक मार्ग को पकड़ के चलेगी ज्ञान की या भक्ति? अरे पहले तो दोनों तीनों को देखना है। हम तो एकदम जो कर ही नहीं पा रहे हैं, सोचो ना कहाँ खड़े हो। हाँ, मैं और मेरा को हम छोड़ते हैं क्या? शरीर को भूल गए क्या? बस वही, जैसे ज्ञान की मार्ग में मेरा सवाल का जवाब दो। नहीं, शरीर को नहीं भूले, शरीर को भूल नहीं सकते हैं। शरीर है तो मेरा भी है, तो फिर ये तीनों को अडॉप्ट करना चाहिए। जब जैसे होता है, शरीर का भावना आता है, मान लो मैं उसका नौकर हूँ, तब काम बन जाएगा। क्योंकि शरीर का भावना तो छोड़ नहीं सकते हैं। और शरीर का भावना क्यों नहीं छोड़ सकते हैं? कल इतना विचार किए, आसान नहीं है। जब तक मैं हूँ, मेरा है शरीर, और ये दोनों ऐसे बन गए हैं, तभी तो दोनों मिल करके मौज ले रहे हैं। दोनों मिल करके मौज ले रहे हैं। अकेले में मौज नहीं आता है। और दोनों पहले से जुड़ गए, अभी कहाँ अलग अलग होंगे? अलग अलग होंगे तभी अगर हम प्रयास इस प्रकार करेंगे, तीनों को पहले लो, फिर जब जिस समय जिसका होता है, तो फिर कम से कम तो दासपना को तो मान लो। हनुमान हनुमान कौन जानते हो? हैं? अपना माइंड है। बिल्कुल सही कहे, मेरा मन को आप समझ गए। हनुमान कैसा है देखो। हु इज हनुमान? हनुमान इज नथिंग बट योर माइंड। सी, बंदर, द monkeys are very unsettled, always restless. The mind is restless. It cannot keep quiet. Catching this and catching that, jumping from one to the other. So same mind, see. And the monkey, when it starts attacking, nothing can stand before it. और हनुमान जी को अभिशाप है, भूल जाओगे तुम अपना ताकत। दिस माइंड व्हेन इट इज वन पॉइंटेड, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इट कैन डू। इट कैन क्रिएट द यूनिवर्स and it can dissolve it also. This mind forgets its strength. Hanuman always forgets his power. He is all powerful. He forgets it. If you remind him, make him aware, Hanuman, what do you think? You can do and undo anything and everything. Then, oh, I am, and he can he can uplift the whole Himalaya. Mind is just like the monkey. He forgets its power. Every mind is, when it relates itself with the cosmic mind, it can do anything and everything. And that can be possible when it becomes one-pointed. That is nothing but the cosmic mind. And it has the all powers. All the powers is there. Mind can do and undo anything and everything. It can create the world. It can dissolve the world. हनुमान जी का वही ताकत है। भूल जाते हैं। ऋषि का अभिशाप है। वो ऋषि कौन है? वही परमात्मा। और
और क्या हनुमान के साथ है? हनुमान जी जैसे रेस्टलेस माइंड भी रेस्टलेस, हनुमान जी भूल जाते हैं अपना ताकत को, ये भी भूल जाता है, और जब याद दिला दो वो कुछ भी कर लेते हैं। और 3 किस्म का उनका नाता है भगवान के साथ, ये भी मन भी ऐसे ही करता है। कभी तो कहता है हाँ मैं सब कुछ सारा दुनिया में हूँ, और कभी तो कहता है मैं तो कुछ नहीं हूँ। मन का यही हनुमान जी और कोई नहीं है, तुम्हारा मन है। पवन पुत्र, पवन पुत्र हनुमान है। सांस अगर नहीं चलेगा मन काम नहीं करता है। पवन पुत्र हुआ। और अंजनी पुत्र, अंजनी कौन? अंजना मतलब कालगी, महिला, और अंजना जहाँ महिला नहीं है उसी का पुत्र है ये, चित्त का, चित्त ही अंजना है। उसमें काली है, काली नहीं भी है। स्थिर है तो चित्त में, चित्त तो स्थिर है, और वो उसमें एक टेंडेंसी है, वो हमेशा चलते रहेगा। उसको चुप कर दो तो निरंजन है, और चलेगा तो अंजनी है। चित्त जब नहीं चलेगा मन तो कहाँ होगा पैदा। इसी प्रकार चित्त का लड़का जो है अंजनी पुत्र हुआ। और बैठ जाओ चुपचाप, डिस्टर्ब मत करो, डिस्टर्ब मत करो। अंजनी पुत्र हो गया। और केसरी नंदन, केसरी नंदन कैसे? केसरी मतलब दे युद्धपति, युद्धपति दे मार्शल, दे सेनापति को युद्धपति कहते हैं। केसरी, उनका नाम भी केसरी। फूलों में देखो केसर कहाँ है और केसर का क्या कीमत है, उसी के वजह से तो फूल का कीमत है। तो उसका और केसर जो ये सारे हम जो हमारे क्यों भाई डिस्टर्ब करने के लिए आए हो? आए चुप। चलो, तो इसी प्रकार सब तरह से, सब तरह से ये हनुमान जी जो है वो आपका मन है, सब कुछ। अब इसी प्रकार जब हम सारा हरिओम, बोलो बोलो जोर से बोलो। हनुमान जी को चिरंजीव क्यों बोलते हैं? चिरंजीवी, ये है चिरंजीवी। आपका मन चिरंजीवी है, मन कभी नहीं मरता है। जब शरीर भी मर जाएगा, ये जो पूरी अष्टक है उसमें तो मन रहता है, चित्त बुद्धि मन, जो 4 अहंकार के साथ ये रहता है पूरे अष्टक में। वही तो कर्म के अनुसार गतिशील होता है, इसीलिए ये अजर अमर है, जीव अविनाशी। कहा ना, जीवात्मा जो है वही मन के रूप में वो अविनाशी है, मरता कभी नहीं, अजर अमर है। हाँ जी, शरीर तो मरेगा, मन नहीं मरता है। परमात्मा बनेगा। मन बनेगा कभी परमात्मा। तो इसी प्रकार मन ही हनुमान है।
इसका उपासना करो। हनुमान का उपासना जो करता है वो बाहुबली बनता है। मतलब मन को चुप कर लो तो सारा तुम्हारे हाथ में है, तुम मालिक हो। उसी से सब कुछ हुआ है, और यानी सबकी कर्ता वही है, और सब कुछ है यानी आत्मा ही सबका उपादान और अधिष्ठान है। ये उपादान और अधिष्ठान सभी ओर जहाँ दृष्टि डालें वहाँ नज़र में आता है। यानी संपूर्ण शक्तियाँ उसी में ही है। मन तो एक शक्ति का नाम है, चलनशीलता का नाम, कर्म का नाम, संसार का नाम, तो सारे शक्ति उसमें है। शक्ति का अपव्यय होता है और उसका संरक्षण करेंगे तो शक्तिशाली बन जाओगे, बजरंगबली बनोगे, अजर अमर बनोगे। और ये जितना अधिष्ठान और उपादान कोई एक वस्तु अगर है, उसको हम अगर नामकरण किए और नाम का सब व्याकरण में हम उसका विश्लेषण करके देखते हैं। व्याकरण कैसा होता है? भाषा को शुद्ध, पवित्र और एक धारावाहिक नियंत्रित करने से भाषा को, उसी को व्याकरण कहते हैं। विशेष रूप पे कार्यवाहक बनाना, उसको कहते हैं व्याकरण, विशेष रूप में करना। तो व्याकरण में शब्द रूप और धातु रूप होता है। एक क्रिया होगा, हम त्रिपुटी देखते हैं, त्रिपुटी में क्या हुआ? एक तो हुआ कर्ता, एक हुआ क्रिया और एक हुआ कर्म, है ना। तो अगर कोई कर्ता हुआ तो उसका रूप करेंगे। रूप कैसे कैसे व्याकरण में कैसा होता है, ग्रामर में वी आर considering what is adhisthana, what is the substratum, and what is the structural form of the object. How, where does it exist, and what is the structural form, infrastructure. Then only we can understand the object. In the grammar, we do all these. In every grammar of any language, the language is arranged in a particular way to easy to use it. That is what grammar shows us. ग्रामर में क्या हुआ? शब्द रूप और every word should be formed in different ways. शब्द रूप बनाना और धातु रूप, the actions are should be understood in what way the action gets done. Action will have many tenses. Verb will have tenses, present tense, past tense, future tense. When the action was done or being done or will be done, or how many persons are acting, all these are in the grammar we see. And the form, the doer, whether he is one or two or many, whether he is doing the action, in what form he does, by himself or he takes help of others. When the event is done, action is done,
कर्म किया गया तो फिर वो किसके कैसे किया, उसी को किस माध्यम से किया. फॉर एग्जाम्पल, इफ द गार्डनर makes the garden, can he do by himself? By his gardener means a person. He will have hands and legs and different senses. So he will act by the help of the senses, hands and legs, and by the eyes and everything. All the senses are engaged. And they cannot do everything. They have to take help of other instruments. Say gardener wants to dig the soil, another instrument is there. Then only he can dig the soil. And then he has to put the seed also. That is another implement to make the garden beautiful. The plant should come out, and there should be manure, water, many things. He has to take help of many things. So all these are called helping hands. इसको कहते हैं उपादान कारक, upadan, instrumental cause. There will be many kinds of causes. Kaise, if one incident is seen, one event is seen, it has been done. So mainly 5 angles of vision we have to see it. Adhishtanam, where it is done, the background, on what. If the drama you have seen, there must be a stage, or else drama cannot be played. And there should be some actors, then only drama. And there should be some director. Many things we have to consider. So for any event, any action, there should be a substratum on which the action is going to be done. Adhishtanam. Tatha karta. There should be a doer. Without doer, no action is done. Isn't it? Adhishtanam tatha karta. एक तो जगह चाहिए जहाँ पर वो कर्म किया जाएगा, और एक कर्ता चाहिए. कर्ता अपने आप कुछ नहीं कर सकता है. इसीलिए क्या कहेगा, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधान. करणम, जिसके द्वारा किया जाएगा कर्म, कोई सहायता तो चाहिए. क्यों? क्योंकि कोई कर्ता इस दुनिया में इंडिपेंडेंट नहीं है, वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. नो डूयर, नो बीइंग इज इंडिपेंडेंट. Yesterday we have discussed it, how we are dependent in every sense on everyone. Every atom is dependent on the other atoms of the whole universe. You are not independent because of your limited identity. Because you are limited, so there is a need of fulfillment to become total. It is the urge of the individual identity. Nobody can get rid of it. Because you are limited, so there is an urge to become unlimited. And because you are the part and parcel of the unlimited, that's how you have become limited.
So there is a momentum to become unlimited. A continuous, unknown, understood, some tendency is pulling you, pushing you to become full, to become unlimited. That is our journey of the soul. Jivan Yatra, it is unending until we become one with the Absolute, which is full in every sense, whole totality. Till then your progress, your journey cannot be stopped. Whenever, wherever, however, you have to become one with the unlimited. That's how our life's journey. That is. इसको बंद कर दो बस. That is according to our modern language, the process of evolution. Evolution process. It is continuous and eternal journey. Eternal journey. Unless and until one gets full perfection, becomes one with the absolute unlimited totality, till then you are bound to proceed further, to go on. And that is our life's journey. So, what happens? You are dependent. You cannot, you are not alone. You will be alone only when you are full totality, or else you are many. Because of your limited identity, you are many. And that's how you are dependent. So, different help you have to adapt to do something. यही है कारण. विविधश्च पृथक अधिष्ठानम तथा कर्ता विविध अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विधान. You are dependent on others, so different kinds of help you need to do an action. Karanam cha prithak vidhan, vividhascha prithak chesta, and the momentum, the trial you do, that is not one-pointed. It is a process. Action is a process. So, different phases. Vividhascha pruthak chesta. See, if the body is doing the work, eyes have to see it, ears have to hear, nose has to, they have to smell all these 5 units of our senses, sabda, sparsa, rup, ras, gandh, the sound, the form, the taste, the touch, all these together, they give rise to an action. Or else one sense cannot do anything. Cooperative society. One has to help the other. So different kinds of attempt we do for doing an action. विविधाश्च पृथक चेष्टा. चेष्टा मतलब एक जो मोमेंट में एक ट्रायल, वट एवर वी वांट टू डू. मैं खड़ा हूँगा, बैठा हूँ तो हाथ को इधर रखूँगा, ऐसा करूँगा,
ऐसा करूँगा तब खड़ा होऊंगा। ये अलग अलग पोजेस है, वीडियो लो तब पता चलेगा, अलग अलग पोज। वो विविध विविध चेष्टा उसी को तो कहते हैं। हाथ को हिलाना पड़ेगा, पैर को हिलाना पड़ेगा, पैर को सीधा करना पड़ेगा, चेष्टा सब अलग अलग। इसी प्रकार कोई भी कर्म हम करते हैं उसमें इतनी विभिन्नता है। किसके लिए किया गया, किसके कारण किया गया, किसके संबंध से किया गया, किससे वो मिला कर्म करने के लिए प्रेरणा अथवा मदद, और कौन सा चीज को लेकर के क्यों, इंग्रेडिएंट्स, उपादान कारण, इंस्ट्रूमेंटल कॉज, all the different kinds of causes are got together, then only an action is possible to be done. So when you consider all these, how do you dare say, I am the doer? Foolish being. Aye? How do you dare claim, I have done this? Yes, I'm ignorant. Your foolishness. Now from onwards, don't tell I have done it. Who has eaten that fruit? Everybody together. I have not eaten. इसी को तो कर्तापना को खत्म करने के लिए ये भावना को हमेशा उनको मन में रखना चाहिए, तभी ये इतना विचार कर रहे हैं हम। By no means you can be all alone the doer, never. इसी को गीता में कहा, प्रकृते है क्रियमाणानि, वही गीता में यह अधिष्ठानम तथा कर्ता करण च पृथक विधान। कर्म एक के द्वारा किया नहीं जा सकता है, और वो करने वाला कौन है, तुम कौन हो? तुम्हारा जो शरीर कर्म करता है ना, वो अकेला नहीं कर सकता है। इंद्रिय ग्राम, ये गांव वाले मिलकर के सब काम करते हैं। The whole villagers get together to do the work, and the village chief ego says, I am the doer. What a foolishness. All the villagers, the hands, legs, this body is a village of senses. Indriya Gram, Gram village. And also it is known as Bhutagram. All the different elements, 5 elements, being mingled with him, many. In the beginning, our village had only few houses, original houses. Now it has been more than 350 houses. They have progenies and they mingle with each other. They marry with each other in the village, and the village population grows. Similarly, 5 elements were the original inhabitants in this village. And now they mingle up with each other and they have been multiplied, and so many villagers are there, so many inhabitants of this village, Bhutagrama, the village of the elements, 5 elements. It is not 5. When they mix together each other in different races, they become many. The whole world is also like that, and this body also, Bhutagram. So where do you stand to say, to claim, to demand, I am the doer? Who are you then? This is a cooperative society. The body, the whole universe is a cooperative society. No single can
do anything without the help of each other. How dare you demand, I am the doer? You foolish nonsense. Huh? You are really nonsense. No sense of the senses. No sense of the senses. Senses are the doers. Prakritehe kriyamanani gunehi karmani sarvas. From other angle still, three qualities, when they get disbalanced, then only that disbalancedness is known as actions and reactions. It creates the process of action. Same action becomes reaction in a process. Process means one thing gets modified or transformed into other. Same process, different phases. Action becomes reaction. And this way, the whole universe has to get together to do an action. And who are you? What are you? Where are you? To say, I have done the action, I am the doer. स्वामी जी साइकोलॉजी में बोलते हैं कि तीन तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं. जी? साइकोलॉजी में कहते हैं कि तीन तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं. पहला जो इमैच्योर होता है वो रिलेशन होते हैं ना, जितने किस्म का हो, कोई बात नहीं. रिलेशन होता है अनेक. वो इसी को मैं कह रहा हूँ कि सारा दुनिया इकट्ठा होगा. किस्म अलग अलग कर दो, नामकरण अलग अलग कर दो, कौन मना कर रहा है? कोई ऑब्जेक्शन नहीं. वो चाहे साइकोलॉजी कहे चाहे फिलोसफी कहे, हम तो विचार कर रहे हैं. हमारा जो विचार जो जिस ढंग से हम कर रहे हैं तो मन को नहीं महा रहा क्या? हम तो जो देख रहे हैं उसको कर रहे हैं. शास्त्र इसको सपोर्ट भी कर रहा है. फिर भी सर वेस्ट में इतना ज़्यादा एम्फेसिस वो लोग देते हैं इंडिविजुअल एक्शन और इंडिविजुअल चॉइसेस को, उसको इस कंटेक्स्ट में कैसे समझेंगे? उनको देने दो. इंडिविजुअल नहीं कर रहा हूँ ना. इंडिविजुअल इज फॉल्स, wrong. You are not individual as one. If you claim you are one, then you are the whole total being. वो साइकोलॉजी का बाप को ले आओ, अकेला कहाँ दिखा दो मेरे को कौन सा एक है वो. उसका बाप को, उसका दादा को, उसका नानी को ले आओ. दो चप्पल मार के पूछूंगा कहाँ एक दिखा देगा वो एक. बोल देता है या दिखाएगा. साइकोलॉजिस्ट हो चाहे फिलोसोफर है चाहे वैज्ञानिक हो, कुछ भी हो जाए, इसका जवाब दो. एक तुम कैसे हो? वही तो एक होने का हमारा झगड़ा चल रहा है. साइकोलॉजी कहाँ जाएगा? इसी के अंदर फिलोसफी है, इसी के अंदर साइकोलॉजी है, इसी के अंदर तुम्हारे साइंस है, इसी के अंदर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, सब कुछ इसके अंदर आया. ज्योग्राफी है, वातावरण है. कह रहा हूँ ना, पांच सारा मिल करके सब कर रहे हैं. इंडिविजुअली कह रहे हो तो बताओ कौन सा इंडिविजुअल है? अगर हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर मगर नहीं, साफ साफ बोलो. अगर मगर से बात नहीं चलता है. लेकिन ग्रेजुअली जो प्रोसेस चल रहा है वो एक इंडिविजुअल के इंटीग्रेशन के लिए चल रहा है ना सर. इंटीग्रेशन माने मतलब आप कह रहे हैं कि वो अकेला पूर्ण हो जाएगा. अकेला पूरा होगा तभी. कैसे पूरा? यही तुम्हारे विज्ञान और साइकोलॉजी भी कह रहा है. अकेला कैसे पूरा होगा? जब वो एक जल का बूंद गंगा जी में डूब गया
तब पूर्ण हो गया। समझे? जब घड़ा फूट गया तो उसका जो आकाश था उसके अंदर का वो पूर्ण आकाश हो गया। जो इंडिविजुअल था वही टोटल बीइंग हो गया। इसको कोई मना कर सकता है? बोलो मना करो, करो मना। एक जल बूंद गंगा जी में डाल दो और बोलो कौन सा गंगा है और वो बूंद कहाँ अलग है, बताओ। साइकोलॉजिस्ट को लाओ, उसका बाप को लाओ पकड़ के कान। हाँ, अरे इतना समझाने से फिर समझ नहीं है। साइकोलॉजी इतना जानते हैं यार, साइकोलॉजी भी इसी के अंदर है और फिलोसफी भी इसी के अंदर। हम सबको इकट्ठा करके एक निरपेक्ष विचार कर रहे हैं। किसी को छोड़ते नहीं, किसी को पकड़ते भी नहीं। बताओ वो साइकोलॉजिस्ट को एक है या अनेक है? वो जो बोल रहा है कौन बोल रहा है बताओ, पूछो उसको। बोल कौन रहा है, क्या बोल रहा है, वो भाषा कहाँ से आया? पहले भाषा को तो एक्सप्लेन करो साइकोलॉजिस्ट। तुम क्या बोल रहे हो, इसका अर्थ तो बताओ पहले। हम तो वहां तक पहुंचते हैं जो बोलते हो उसका क्या अर्थ है, अनर्थ है, कैसे। भाषा को हम व्यवहार, भाषा को एनालाइज कर रहे हैं। एक शब्द का क्या रूप होता है, क्या इस्तेमाल होता है, वहां तक हम जा रहे हैं। तो वहाँ साइकोलॉजी कहीं कोसों पीछे खड़े हैं। एक्चुअली एवरी मोमेंट वी आर क्रिएटिंग द पर्सनालिटी, वो समझना बहुत टाइम लगता है। सब कुछ ही इसी के अंदर है। हम यूनिवर्सली, कोई किसी का ऑब्जेक्शन है तो सवाल करो ना, इसके ऊपर करो। वो साइकोलॉजिस्ट को रखो पीछे पीठी पिछाड़े। तुम्हारा क्या समझ नहीं आता है वो तुम पूछो। पूछो कहाँ मैं गलत बोल रहा हूं तो बोलो। आटम इज यूनिवर्स, ये गलत है क्या? मतलब हाँ गलत है। एक्चुअली आटम में गलत है। देयर इज नथिंग कॉल्ड आटम, एसोसिएशन ऑफ फंडामेंटल एनर्जी पार्टिकल्स। वो पार्टिकल का मतलब देयर इज नो पार्टिकल। पकड़ो एक पार्टिकल को पकड़ के दिखाओ, बोलो, और उसको स्थिर करके दिखाओ। आटम का स्थिर है क्या? तभी तो कह रहे हैं पार्ट ऑफ एनर्जी। एनर्जी को आटम नाम दिया, उसी को हम दूसरे भाषा में कहते हैं शब्द का खेल है सारा दुनिया। शब्द मतलब वेव है, एनर्जी है। उसको कितने भी नाम दे दो, कुछ भी कर दो, वो नाम बदलता है, रूप बदलता है। ये है वो गिरगिट, रंग बदलता है। एक्चुअली उनका सवाल का भी प्रॉब्लम नहीं है सर। वेस्टर्न साइकोलॉजी स्टार्ट्स विद ईगो, पर्सनालिटी। वो ईगो भी कहीं नहीं मिलता है। अगर मिलता है वो अकेला नहीं। ईगो जानते हो ईगो किसको कहते हैं? ईगो नाम का कोई चीज नहीं, जो बदलता हुआ फेज को हम ईगो कहते हैं। ईगो बोलते ही ईगो बदल चुका है। कहां से देखोगे तुम्हारा आइडेंटिटी? देयर इज नो आइडेंटिटी व्हाटसोएवर। You are not at all to be found. You are gone. You are a gone case. The moment you say I, explain what is I. Before I complete my explanation, वो I बदल गया होगा। I is gone. The moment you think of I, speak of I, और analyze I is gone. कितने सिर फोड़ के कहते हैं everything is changing. How can you rely upon any changing phenomena? Your I changes, your mind changes, your identity changes, your
form changes, your name changes, your vision changes, the objects you see, that also changes, the time changes, the condition changes. What is stable, come to stability and then speak. That is what we are speaking. Absolute equilibrium is the truth, and everything is untruth. Whatever changes is not reliable. It is called the world. Kick it to the hell. इसमें सारा तुम्हारे ईगो, तुम्हारे साइकोलॉजिस्ट, तुम्हारे फिलोसफियर्स और तुम्हारे वैज्ञानिक लोग, तुम्हारे जो कुछ है इस संसार के अंदर है, मारो उसको एक तीर, ज़्यादा न जरूरत नहीं, लगाओ आग उसको। स्वामी जी, कोई जैसे कुछ नाम रखते ही या कुछ नाम सोचते ही वो आई बदल जाएगा? बिल्कुल बदलता, हर पल में कुछ भी अगर हमने सोच बिल्कुल जैसा जो सोच बदलता है तो मैं भी बदलता हूँ। सोच से असोच हो जाता। मैं तो एक सोच का नाम है। मन को अलग करके मैं बोलो, हाँ, जीव को अलग करके मैं बोलो, सांस को अलग करके मैं बोलो, ये सारे बदलता हुआ एक कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ को कुछ। मैं कहा ना आखिर, समथिंग और अदर is sin or other, has some contact or other, by someone or other, by some way or other, at some time or other, for something or other, at some place or other, in some condition or other, somehow or other, and is understood or other, and that thing or other is taken as world or other. ये वर्ल्ड का डेफिनेशन है. This is the definition of the world. And you are in the world, your definition also is like this. You are or other, because the moment you say I is gone, so you are or other is taken as something or other, as body or mind or intellect or identity or form or name or anything, taken as something or other. Nothing is clear, nothing is. Nothing can be said, nothing is said. Whatever you have said, it is gone. Come on. The only language is the silence. That's how so loudly I shout, keep quiet! Don't talk. You will understand everything. Don't make noise. अरे हाथ उठा करके बोल बोल के थक गए, कान फाड़ करके सुन लो। हाँ, नहीं तो कल जैसे वो बुढ़ा को खिचड़ी खिलाए थे ना, ऐसे मैं सुनाऊंगा, कान फाड़ करके ठोस ठोस करके सुनाऊंगा। हाँ, एक लगी ना इधर, तब सुनने में आ जाएगा। ठीक कान के ऊपर एक करो पट, तभी सुनने में आएगा, सब समझ में आ जाएगा। वो तो आखिर रास्ता है। अरे समझने के लिए कोशिश करो यार। इधर किसी को हम
ना कोई फिलोसोफर है, ना कोई साइकोलॉजिस्ट है, ना कोई साइंटिस्ट है, ना कोई इधर कोई नहीं है। हम निरपेक्ष जो हमारे सामने दिखता है उसी को विचार करें। जो सामने देखता है, जो कुछ हमको समझ में आता है, इसके विरुद्ध में तुमको समझ में नहीं आता है, कहीं कहीं तुमको ऑब्जेक्शन है तो बोलो। हम तो बीच बाजार में खड़ा आकर के बोल रहे हैं, है कि नहीं? चोरी छिपी से थोड़ी बोल रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं तुम्हारे साइंटिस्ट को, तुम्हारे साइकोलॉजिस्ट, तुम्हारे फिलोसोफर को। सर दर्शन को पहले सुनते हैं, उसके बाद एक एक थप्पड़ मार के कहते हैं चाहो घर बैठो। पहले सुनेगा, आजा आजा बच्चा, कहाँ से आया है? बोलना जानते हो? पहले तो साइकोलॉजी भी फिलोसॉफी में ही था, बाद में ये एडलर यूल ने अलग। अरे ये पागल सब कुछ इसी के अंदर है, कहीं नहीं जा सकता हो तुम। हमारे हाथ मुट्ठी को छुड़ा दो तो चोटी पकड़ रखे है कि नहीं? तो इसी प्रकार जो संपूर्ण शक्तियां हैं और जो संपूर्ण दृष्टि है, अलग अलग दृष्टि, और जितने अधिष्ठान है, और जो उपादान मतलब इंस्ट्रूमेंट्स कॉज, इंस्ट्रूमेंटल कॉज, कुछ उपकरण के बिना कोई कर्म हो ही नहीं सकता। इसलिए इंस्ट्रूमेंटल कॉज, हेल्पिंग कॉज, और द active means the momental cause, momentum, how the momentum is given, and all these by what, for what, from what, in what, at what time, करण सप्तमी अधिकरण कारक जो होता है, समय भी देखा जाता है, स्थान भी देखा जाता है। समय और स्थानाधिकरण, कालाधिकरण, संबंध कारक, what relationship it has got with others. Without that no action can be done. Without purpose there cannot be any action. Without doer there cannot be any action. So all these different angles you have to consider to say an action is done, and then you can say who is the doer. इसको इतना विस्तार से गीता में सब समझाया, यहाँ भी सारे शास्त्र तो इसी के ऊपर है। तुम कहीं पर नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं, तुम गए बीत, जो कुछ है ये सब कुछ उसी का है, वही तो कर रहा है। जो पदार्थ दिख रहा है तुमको, जो चीज है तुम्हारे चारों तरफ, तुम जिसको संसार करके मान रखे हो, मैं और मेरा, ये सब उसी का है, उसी के लिए है। ना तुम हो ना तुम्हारा है, हैं? उसको पीसो, चटनी पीसो और चाटो। कैसे मानूं? वो जो अगर कहते हो तुम सारा संसार माया का खेल और ये शक्ति का उपासना करो, अपने गला काट के अपने हाथ में रख करके अपना खून को पियो, तब समझ में आएगा। छिन्न हस्ता का, छिन्न मस्ता का उपासना करो, तब तुमको समझ में आएगा। कट योर हेड and hold your head in your palm and drink your own blood, then only you will understand who are you.
Cross this ego into nothing, zero. Eat your ego by yourself. Then only you will understand who are you. Or else not, it is so easy. To cross this ego, it is so difficult. Unless and until you cross this ego, then the world starts as it is. And that's how he is explaining again and again. My dear, you are nowhere, you have nothing. All these belongs to him. It does not, neither you are there nor yours is there. That's how Gurudev used to sing. Jagat kalpana, jiva kalpana, savai kalpana, dirgha sapana. Nothing exists, nothing belongs to me, neither I am body nor mind, immortal self am I. Nothing exists, nothing belongs to me. वो गाया जो देखा दुनिया को, समझे? इसी को ये बोल रहे हैं भाई कि दुनिया में जो कुछ नाम रूप देखते हो वो उसका है, तुम्हारा नहीं। उसके लिए है, उसी के द्वारा है, उसका माध्यम से है, उसके लिए है, उसका है, उसी में है, सब कुछ उसका। जाओ भीख मांगो कहीं, कंगाल कहीं कुछ नहीं तेरा। भीख मांगना ज्ञान मिल जाएगा। नौकरी करो उसका। देह बुद्ध्यात उदासो हम, सब कुछ ये जो है वो जहाँ पर भी दृष्टि जाता है वो सब नज़र में जो कुछ आया, नज़र मतलब खाली आँख का नहीं, सारे पांचों इंद्रियों का, वह सारे शक्तियाँ और उसी है, उसी का है, और वही भीतर है यानी सूक्ष्म है, वही सर्वमय है, बाहर भी वही है। अंतर्वही जगत सर्वम व्याप्तम नारायणम स्थितम। अंदर भी वही है, बाहर भी वही है। और कैसे? जैसे तुम अपना बेडरूम से उठे और बेड को छोड़े और फिर चले थोड़ा किचन के तरफ, थोड़ा चाय पिए और फिर धीरे से मेन गेट के पास आए और वॉकिंग के लिए चल दिए। वैसे ही तुम्हारे अंदर का वो अहम बाहर जा कर के ये सब बना रखा है, समझे? तुम सोए हो अंदर, अंतरतम। Bedroom is the innermost chamber, isn't it? Where you lie down, innermost chamber of your house, where you lie down. When you get up, what do? You have to come out. Do you go on lying on the bed day or night? You have to get up. And then you have to walk on. And then somehow or other you have to come out of the door. House. You have to do your activities outside only, not in the bedroom. Isn't it? That is your outer world. That is how you are sleeping in the heart, innermost chamber, and whatever you see outside, it is your outside house. Whatever is there inside, it has come out and it is looking
so many restless differences outside. It is the projection of the inner eye. Okay? It has been projected out because it cannot, it has the tendency to go out. It has to do something. It has to do something. It cannot sleep always. If you want rest, don't do anything, lock up the door. इंद्रिय निग्रह करो. इंद्रियों को सब चुप कर दो. Lock up the doors means the doors are the senses. Lock up them and sleep inside. Take your rest. That is called rest, to be inside. That is, in other language, introvertness. Meditating on the heart. Okay? If you want to rest, welcome. If you want to work, welcome. But you are all the while, you are. Find out who are you. Which is same inwardly and outwardly. So tomorrow we shall see, oh, कोई नहीं, स्वामी जी चले गए, कोई नहीं मेरे को वार्निंग देने वाले. हाँ? नहीं तो फिर ये कहाँ का कहाँ पहुँचेंगे. Can I ask one question? The tomorrow answer. Today. No, evening. Only today. Evening we shall. Evening. Okay. Evening. Or tomorrow also we will bring it. Okay. Now you can speak out this question. Only question I give. Only question. You said inner chamber, in heart. In Indian philosophy, heart is inner chamber. But in Japanese philosophy, inner chamber is in the belly. Here. Belly. In the belly. The navel. Navel. Here, this region. Yes. In Japan, what Yes. is the difference? This is the Difference is nothing. No, there is no difference. It is central point. central point. That is called heart, that is called navel, that is called central point. Central point. Is Yes, that is what I am explaining. Self means the central point, central point. the holder of the whole thing. Yes. Yes. There is no difference. No difference. That is called self, Atma. The center is called Atma. It changes. But in Japan, Japanese tradition, we never say heart. Always we say this part. Yes. We also say Muladhar. Muladhar. Muladhar, the substratum of everything. There are 7 centers of nerves, and Muladhar is the beginning. Yes. All the nerve system, they are centralized and they are working from that center. Different centers are there. And heart also is a center. Navel also is a center. Ear also is a center. Yes. Of course, all the centers merge here. There are different centers. You see, one person has different zones, the manager, the director, different managers are there, different offices are there. He has to go and have a round. He has different offices. He has to sit in different, any office he sits. He says, this is my office. Never mind, no objection. No objection. Whether Japanese or Indians, no objection. You have the right to sit anywhere
and work on. Okay, thank you. Hari Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevamasinsate. Om Shanti Shanti Shanti. Sadguru Bhagavan ki jai, Satchidananda Bhagavan ki jai, Sabda Brahma ki jai, Saraswati Maharani ki jai, Yoga Vasistha Bhagavan ki jai. Hari Om.